Namaskar from all of us at NIT Tiruchirappalli. We are joining one another from different locations for the inauguration of the Golden Jubilee building of the Department of Chemical Engineering. Our chief guest, the Honorable Minister for Education, Shri Ramesh Pokhriyal Nishank, is joining us from New Delhi. The chairperson of the Board of Governors, Shri Bhaskar Bhatt, joins us from Bangalore. This inaugural ceremony is streamed live for all our faculty, students, staff, the alumni in different parts of the globe. To all of you in different time zones, let me greet you with a good morning and a good evening. At the venue, on the dais, are our director, Dr. Minishadi Thomas, the registrar, Madam Cinderella, and the head of the Department of Chemical Engineering, Professor Meera Sharifa Begum. We start the inaugural function with the hymn Vande Mataram. Let us bow down to the mother country. I now call upon the dignitaries on the stage, the registrar and the head of the Department of Chemical Engineering, to join the director, Madam Minishadi Thomas, and our Dean, Planning and Development, Professor Durai Selvam, for lighting of the ceremonial lamp. In the 56-year history of the National Institute of Technology, Tiruchirappalli, Dr. Minishadi Thomas is the first woman director, and she has been one of the finest chapters in that history. Ever since she took over in 2016, NIT Trichy has climbed the NIRF rankings to be the 9th best engineering institute in the country and the best of the NITs for the 5th year in a row. She has provided the motivation and the leadership to see that NIT Trichy has an all-round growth and development. Her untiring efforts have seen the institute showing improvement in every parameter like research and consultancy, patent filing, infrastructure, recruitment of faculty,
greening of the campus, and starting of centers of excellence. May I now request her to welcome the gathering. Good evening. Namaskar. Most respected Shiksha Mantri, Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji, beloved Chairperson Board of Governors, Shri Bhaskar Bhatt, Additional Director General, Ministry of Education, Shri Madan Mohan ji, Registrar in Charge, Professor Cinderella, Head of Chemical Engineering, Professor Meera S. Begum, Dean P&D, Professor Durai Selvam, other deans and HODs, faculty, staff and students, alumni from across the world, press and media, ladies and gentlemen. With immense pleasure and gratitude, I welcome the Honorable Chief Guest to our midst. His life is a beautiful message about the triumph of passion, persistence and purpose. A teacher, a journalist, a poet, a writer, sensitive thinker, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank adorns many hats. As an able Minister of Education, Ramesh ji has taken special interest in the welfare of NITs and we are grateful to you, sir. I am beholden that Honorable Minister found time to virtually inaugurate our Golden Jubilee building for the Department of Chemical Engineering today. On behalf of the faculty, staff, students, and alumni of NIT Trichy, I extend you, Minister, a hearty welcome. I welcome our beloved Chairperson Board of Governors, Shri Bhaskar Bhatt, to this event. Special welcome to my fellow directors and friends from other institutes who are attending this function. I extend a warm welcome to my team, our deans, registrar, HODs, staff and students. I welcome and greet the alumni of the institute and the press and media for giving wide publicity to this event. Honorable Minister, I wish to highlight some of the very recent achievements of the Institute in the past few months. Please note that we are the only NIT to achieve these feats. The Institute is part of the National Supercomputing Mission. A supercomputer is being installed at an investment of around 19 crores. The MOU with CDAC was signed on 12th October in the presence of Shri Sanjay Dotreji. We are part of the Prime Minister's Research Fellowship Granting Institution, being in the top 25 institutes in India. We are an exclusive center for IPR set up by the National Research Development Corporation. We are appointed the National MOOCs Coordinator for UG and PG engineering programs by the Ministry of Education. We inaugurated a new Center of Artificial Intelligence, IoT and Intelligent Machines recently. Our sterling performance in NIR of India rankings show that we are 9th in engineering and 24th overall and best among the NITs. Our strategic plan, which was unveiled 2 years ago and implemented effectively with periodic review and follow-up, has kept us on track with all the above achievements. I'm happy to report that we have had a smooth sailing during the pandemic with online teaching, examinations, smooth functioning of offices with e-office in place and even online student elections. I'm also glad to report that quality of publications and patents touched a new high in 2019 with 34% publications in Q1 and 38% in Q2 journals. We invested around rupees 300 crores in the last 3 years on research, and more centers of excellence are getting inaugurated in advanced automation, energy harvesting, and storage technology. The Institute is well aligned with the National Education Policy 2020, with flexible curriculum introduced in 2014, where the students can pick the courses of their interest. Credit transfer is already enabled from few institutions. The Institute is moving towards a multiversity. We introduced MA English program this year. I'm proud to report that
NIT Trichy recruited 69 new faculty members in March 2020. 68 have already joined and started teaching and research, which will help us in this endeavor. I'm excited to report that P. Pugayarasi, a girl from Government Girls High School, Manachalallur, and P. Setupati, a boy from Government Higher Secondary School, Lalgudi, has cracked the JEE examination 2020 and secured admission to NIT Trichy. This is so special because they did not attend any coaching classes. They were trained by the Ignite Teaching Club of NIT Trichy with access to the resources of the institute on all weekends, including stay here with our students in the hostels for all these students. We trained 20 students of class 12 and due to the pandemic, only 5 could continue with telephonic coaching and 2 secured admission to NIT Trichy. We are training 40 students of 11th class now, all chosen from rural government high schools of Trichy district through a district-wide test at the beginning of this academic year in collaboration with the Trichy collector. We are really proud of this initiative and will continue the efforts to train rural children to help them come up in life. NIT Trichy continues its promise to the environment, and in our effort to make an eco-friendly and sustainable campus, we launched a massive greening of the campus, and in the last 2 years, we have planted and nurtured around 6,000 plus saplings. The Department of Chemical Engineering at the Institute is one of the premier centers of chemical engineering in India, recognized by industries as well as academia. The department's vision is to be a global center of academic and research excellence to serve the society. The department was started in 1967 by a visionary, Dr. S.H. Ibrahim, as the founder head, offering UG, PG, and PhD programs. Has so far produced 80 plus doctorates, 1,200 MTech graduates, and 2,500 undergraduates gainfully employed all over the world. The department has excellent research facilities, able faculty members, and a rich alumni base. To commemorate the Golden Jubilee of the Department of Chemical Engineering, this new building has been constructed, which houses classrooms, laboratories, seminar halls, and faculty rooms. The annex building will help the department perform better in multiple ways. Respected Minister, NIT Trichy has much more potential yet to be realized. We are working towards creating an international presence and impact, further improve our global and national rankings, develop innovative solutions, and contribute more to the society and the neighborhood around us. I'm confident that with the help from the Honorable Minister, the Ministry of Education, and with our single-minded devotion, we will achieve the set goals and targets of our strategic plan. Once again, I warmly welcome Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji to NIT Trichy. I hope Minister will visit us in person as soon as the pandemic is over. Thank you very much. Thank you, Madam Director, for laying out the milestones that NIT Trichy has reached and also for being very clear about the miles we are yet to go. Your presentation also emphasized that NIT Trichy, under your leadership, has accepted the new education plan with both hands and is striving to implement it in letter and spirit. Thank you, Madam. Our Chairperson, Board of Governors, Shri Bhaskar Bhatt, joins us from Bangalore. We are happy to see him share this moment of history with us. May I request you, sir, to deliver the presidential address. Thank you. Honorable Shiksha Mantri, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji, Director, Dr. Minisha Ji Thomas, Head of Department, Meera,
Begum, registrar, heads of departments, deans, faculty, staff, students, and guests. It is, of course, a great pleasure and an honor for me to be here at this very, very important juncture of the Institute, the Chemical Engineering Department inaugurating in its golden jubilee year a brand new infrastructurally modern facility for itself. First of all, thank you so much, Minister Ji, for having agreed to inaugurate this event. I have heard a lot about you, but more importantly, I know that this institute, you warm towards us, you have a special liking for this institute, and that feeling is very special for all of us in the board of this institute. Of course, I must applaud the commitment of the Ministry of Education and the Union Government towards higher education of the country, which is evident by the fact of the huge budgetary allocations towards the CFTIs and the cause of higher education. As a board of governors, we choose to enable this institute to achieve its vision, or at least guide it along that path, which is of becoming a globally competent university trusted for its technical excellence, where learning and research integrate to sustain society and industry. This is a very, very inspiring mission. At the same time, the national education policy recently unveiled, if I must say, is also inspiring for all of us in the board. Its messaging of India-centered education, the desire to transform the nation, sustainable, equitable and vibrant, making the nation equitable and vibrant, creating a knowledge society with high quality education to all, and particularly the multidisciplinary approach to each institute, especially institutes of national importance like the NITs, is a challenge, but at the same time, a very, very inspiring, almost I must say, war cry. We are with the nation as a board of governors, and I'm sure the faculty, staff, ably guided by the director, will achieve these goals as they move along. I appreciate the efforts of the director, Dean Planning and Development, and Head Chemical Engineering Department for the infrastructure established, which will augment the increased need for research and increase in student strength. The classrooms, laboratories, seminar halls, and faculty rooms of this building will help to achieve the department's vision to be a global center of academic and research excellence to serve society. The NIT campus is a very large campus, and as the director said, Honorable Minister Ji, we would love it if you could visit us in safer and better times. It has much to offer to the citizens of this nation. In earnest hope of serving the noble cause of higher education, I am sure the Institute will achieve many, many heights in the coming days. Thank you and namaskar. Thank you, Chairperson Sir, for emphasizing that NIT Trichy is with the nation and will strive to make the nation a global knowledge leader. It is our prayer and our hope
that in safer and better times, the Honorable Minister would find time to be with us here on the campus of NIT Tiruchirappalli. May I now request the Honorable Minister of Education, on behalf of the Director and the NIT Tiruchirappalli community, to unveil the plaque and mark the inauguration of the Golden Jubilee building. Ladies and gentlemen, please join us on the virtual tour of the Golden Jubilee building. A former Chief Minister of the state of Uttarakhand, our Shiksha Mantri, Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji,
answers to the nom de plume Nishant. He is an accomplished writer in Hindi who has also been translated in other languages. He has published anthologies of poems, novels, short stories, and travelogues. As one who is known to have written poems about the nation, about the Ganges and the Himalayas, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank takes his place alongside such names of Hindi literature as Ramdhari Singh Dinakar and Suryakant Tripathi Nirala. His presence today at the inauguration of the Golden Jubilee building makes this occasion truly historic. We are looking forward to your message, sir, for us at NIT Tiruchirappalli. Over to you, Shiksha Mantri ji. बीओजी के अध्यक्ष श्री भास्कर भाट जी, निदेशक एनआईटी ट्रिची डॉक्टर मिनी साजिद थॉमस जी, आज ये स्वर्ण जयंती भवन जो रासायनिक इंजीनियरिंग विभाग का यहाँ पर स्थापित हुआ है, उद्घाटित हुआ है, उनकी प्रमुख विभाग के प्रमुख डॉक्टर के.एम. मीरा शरीफ बेगम जी, हमारे अतिरिक्त महानिदेशक श्री मदन मोहन जी, सभी फैकल्टी, सभी छात्र छात्राएं, बीओजी के सभी सदस्यगण और उपस्थित जो आज हमारे साथ इस महत्वपूर्ण अवसर पर जुड़े हैं, मैं आप सभी को बहुत बधाई दे रहा हूँ। मैं इस अवसर पर जबकि स्वर्ण जयंती भवन का उद्घाटन हो रहा है, ऐसे अवसर पर जबकि ये संस्थान लगातार अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं और राष्ट्र के सम्मुख एक अच्छे स्तर पर उभर करके लगातार प्रगति के क्षेत्र में आ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये अवसर बहुत अच्छा है, हमारे लिए खुशी का अवसर है, मेरे छात्रों के लिए, हमारी फैकल्टी के लिए, मेरी व्यूजी के लिए, मेरे डायरेक्टर के लिए और मेरे देश के लिए। इसलिए मैं आपको बधाई देने के लिए आपके बीच आया हूँ। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि जब भी कभी समीक्षा होती है तो त्रिची का नाम मेरी एनआईटी में शीर्ष पर आता है। इसकी मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ आप सबको कि त्रिची हमेशा आगे बढ़ कर के काम कर रहा है। 17 विभागों के 6,880 छात्रों के साथ 15 वर्षीय रणनीतिक प्लान के तहत एनआईटी त्रिची जो आगे बढ़ रहा है, इसने ये लगातार पीछे के वर्षों में अपनी एनआईटी की रैंकिंग में शीर्ष पर नंबर 1 पर है। मेरी शुभकामना कि आप हमेशा नंबर 1 पर रहें और अच्छा काम करें, आप अच्छा बढ़ाएं, पूरी आपकी फैकल्टी को, आपके छात्रों को, आपके इस एनआईटी परिवार को मैं शुभकामना देना चाहता हूं। और एनआईआरएफ रैंकिंग में भी आप 9वें स्थान पर हैं, तो ये भी मेरे लिए खुशी का विषय है कि आप एनआईआरएफ रैंकिंग में भी आप 9वें स्थान आपने अर्जित किया है। और स्नातक और स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग कार्यक्रम में जो राष्ट्रीय मूक के समन्वयक के रूप में भी ये त्रिची लीडरशिप दे रहा है, ये भी मेरे लिए अच्छा है। इसकी भी मैं आपको शुभकामना दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ किसी भी संस्थान की जो सफलता होती है वो सफलता भवनों को देख करके नहीं, बल्कि उससे निकलने वाले
जो छात्र हैं वो किस स्थान पर पहुँचे हैं, वो देश का गौरव कितना बढ़ा रहे हैं, वो कितने विजनरी हैं और उस विजन को वो कैसे करके समाज के अंदर लेकर के जा रहे हैं, ये उस पर निर्भर करता है। और जब मैं पीछे की आपके पूर्व छात्रों की ओर नज़र डालता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि चाहे वो श्री एन चंद्रशेखरन जो चेयरमैन टाटा सन्स के रूप में आपने यहाँ से छात्र के रूप में निखर करके गए हैं, और राजेश गोपीनाथन जो सीईओ हैं टीसीएस के, एयर मार्शल कनकराज हैं, श्री के.आर. श्रीधर, बहुत सारे जो यूएस में हैं, देश में हैं, तमाम क्षेत्रों में लोग आज इस एनआईटी के गौरव को बढ़ा रहे हैं, देश के गौरव को बढ़ा रहे हैं। अकादमिक क्षेत्र और उद्योग के बीच जो हमेशा एक गैप रहा है, उसको आपने काफ़ी कुछ पाटा है। मैं पीछे के समय से देख रहा हूँ कि त्रिची ने उद्योग और संस्थान दोनों को जोड़ा है। जो उद्योगों को ज़रूरत है उसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है, और पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके इस छात्र को उद्योगों के साथ जोड़ा है, और इसी की ज़रूरत थी जो आपने किया है। आपने पेटेंटों की भी संख्या में देख रहा था कि 2 वर्षों में 38 पेटेंट आपने फाइल किए हैं, और 4 पेटेंट आपके स्वीकृत भी हो गए हैं। और पीछे के समय में आप जो पेटेंट की बारे में जब चिंता हो रही थी तो मैंने वाणिज्य मंत्रालय को भी कहा है कि कुछ वो अपने मानकों को कुछ हल्का करें, क्योंकि इसकी ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट हो सके। अभी मैं जब शोध अनुसंधान के क्षेत्र में देखता हूँ, टाइम्स रैंकिंग को देखता हूँ, क्यूएस रैंकिंग को देखता हूँ, और फिर अपने संस्थानों की समीक्षा करता हूँ, तो मुझको कहीं ना कहीं शोध और अनुसंधान में, रिसर्च में, पेटेंट में अभी हमारा काफ़ी अंतर महसूस होता है, और जिसके कारण हम उन ऊंचाइयों पर अभी तेजी से नहीं पहुंच पा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर। तो मुझे भरोसा है कि जो अब नई शिक्षा नीति आ रही है उसके लिए पूरा मैदान खाली छोड़ा है। हम जहां नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री जी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में ये रिसर्च फाउंडेशन शोध और अनुसंधान के पूरे संस्कृति को और विकसित करेगा। प्रतिवर्ष 20,000 से भी अधिक, 20,000 करोड़ से भी अधिक धनराशि केवल इसी पर खर्च होगा, और वहाँ तकनीकी को अंतिम छोर पर जाने के लिए और तकनीकी की दृष्टि से मेरे देश को शिखर पर पहुँचाने के लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का गठन हम कर रहे हैं। इन दोनों के गठन होने से जिस तरीके से जो छोटी छोटी चीज़ें जिसके कारण हमारी इस गति रुक जाती है, वो छोटे छोटे गड्ढे पटेंगे और निश्चित रूप में मेरे ये संस्थान शिखरता को पाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। आपने स्किल डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, ये जो प्रधानमंत्री जी ने लगातार कहा, मैं एक नए भारत के निर्माण का मैं जो उनकी संकल्पना है, और वो नया भारत जो सुंदर भारत हो, जो स्वच्छ भारत हो, जो सशक्त भारत हो, जो समृद्ध भारत हो, जो आत्मनिर्भर भारत हो, और जो श्रेष्ठ भारत हो, और ऐसा जो 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत होगा, ऐसा स्वर्णिम आज मुझे लगता है कि जो आपका ये स्वर्णिम जो आपका भवन आज उद्घाटन हो रहा है, ये स्वर्ण जयंती भवन मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की आधारशिला बनेगा, ऐसी मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूँ, ताकि आपका ये भवन यहाँ से जिस तरीके से छात्र निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो निश्चित रूप में उस सपने को पूरा कर सकेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। आपने 2020 में आपने 25 सरकारी संस्थानों में से जो अटल इनोवेशन रैंकिंग में भी आप अच्छे आए हैं, और 2020 में 3 फैकल्टी स्टार्टअप कंपनियां भी आपने जो स्थापित की हैं। मुझे भरोसा है
कि आगे और तेजी से ये बढ़ेंगे और मेरे युवा नौकरी के लिए नहीं, नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि नौकरी देने के लिए यहाँ तैयार होगा। ऐसा मेरा भरोसा है, जिसमें इतनी आत्मविश्वास हो। और वैसे भी अभी तो हम जो नई शिक्षा नीति के तहत ला रहे हैं, हम जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल से ही शुरू कर देंगे, वहाँ हम क्लास 6 से ही वोकेशनल स्ट्रीम के साथ, इंटर्नशिप के साथ ये जो वोकेशनल एजुकेशन देंगे, उससे 6वीं से बच्चा पूरी इंटर्नशिप के साथ जब आप तक पहुंचेगा तो आपके पास ऐसा हीरा बन करके आएगा जो आपको उसको ऊंची उड़ान देने में सहूलियत होगी और वो शिखर पर जा सकेगा। और इसके लिए ये तमाम परिवर्तनों के साथ ये नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वो कई विकल्पों के साथ, ये चाहे उच्च शिक्षा में हो, कुछ भी विषय ले सकते हैं आप, कभी भी छोड़ सकते हैं तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि परिस्थितिवश आप बीच में छोड़ रहे हैं तो यदि 2 साल में ही छोड़ दिया या एक साल में छोड़ा, कई बार 4 वर्ष की यदि डिग्री होती है और 2 वर्ष में या 3 वर्ष में छोड़ करके छात्रा जाती है तो सारे वर्ष उसके बेकार हो जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। यदि 1 वर्ष में परिस्थितिवश छोड़ के जा रहा है तो उसको सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। 2 वर्ष में छोड़ के जाता है तो डिप्लोमा मिलेगा। 3 वर्ष में छोड़ के जाएगा तो उसको डिग्री मिलेगी। और यदि वो बीच में आकर के फिर वो अपने भविष्य को और संवारना चाहता है तो वो आ सकता है और वहीं पर जहां उसने छोड़ा है वहीं से वो अपना शुरू कर सकता है। ये ऐसा एक क्रेडिट बैंक तैयार किया जा रहा है जो बच्चा कहीं भी दुनिया में जाकर के अपने क्रेडिट के हिसाब से वो कर सकता है। और इंटरनेशनल स्तर पर हम इस शिक्षा को लाए हैं, जहां दुनिया के 100 विश्वविद्यालयों को, जो शीर्ष विश्वविद्यालय हैं, उनके अंतर्गत जो शीर्ष विश्वविद्यालय, उनको भी हम अपनी धरती पर आमंत्रित करेंगे। और जो अपने हमारे ये विश्वविद्यालय और ये जो बड़े संस्थान हैं हमारे, जो हमारे देश के गौरव हैं, वो दुनिया में जाकर के अपना स्थान स्थापित करेंगे, वहाँ भी छात्रों के साथ पढ़ाई करेंगे। क्योंकि हमको इस बात की भी चिंता है कि आज मेरे देश का 7 से 8 लाख जो छात्र है वो विदेशों में जा रहा है और इस देश का 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष विदेशों में जाता है। और ये देश विदेश की प्रतिभा और पैसा दोनों देश के काम नहीं आते हैं। जो प्रतिभाशाली होते हैं वो उन देशों में उनको शोध और अनुसंधान करके वो आगे अच्छा पैकेज दे देते हैं और वो अच्छे पैकेज लेने के लिए उन देश की धरती पर वहाँ शोध अनुसंधान करके उनकी तकनीकी को भी बढ़ा रहे हैं, उनके सामर्थ्य को भी बढ़ा रहे हैं, वो अपने पूरी मेहनत से उनकी आर्थिकी को भी बढ़ा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2024 में वो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था चाहते हैं। एक और आत्मनिर्भर भारत, दूसरी ओर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और तीसरी ओर मेरे ये संस्थान जिनके सामने पूरा खुला मैदान है, जिसके सामने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, 130 करोड़ लोगों का देश है और ये देश इतना व्यापक बड़ा विस्तारवादी देश है जिसमें तमाम उतनी प्रकार की समस्याएं भी फैली हुई हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए वो आगे आएगा, शोध और अनुसंधान करेगा। और इसीलिए हमने कहा अभी भी हम दुनिया के 127 शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ स्पार्क के तहत शोध और अनुसंधान कर रहे हैं। अभी हमने प्रधानमंत्री अद्ययावृत्ति में जो शोध और अनुसंधान है उसमें भी कुछ मानकों को ढिलाई दी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये छात्र शोध और अनुसंधान कर सके। अभी तो ये पैकेज की ओर दौड़ रहा है, उसको लगता है बीटेक कैसे करूं, एमटेक भी नहीं करना चाहता है। बीटेक करके उसको यदि कहीं मिल जा रहा है तो वहीं भाग रहा है। अभी हम लोगों को इस जो छात्र है इसके अंदर शोध और अनुसंधान की जागृति को भरना पड़ेगा ताकि ये एक योद्धा की तरह अनुसंधान करे, उसको बहुत जल्दी न रहे, वो पैकेज पाने की न रहे, बल्कि देश के अंदर एक उदाहरण प्रस्तुत करने का मानस बने उसका। इसकी जरूरत है इस समय।
और मुझे भरोसा है कि जो परिवेश पूरा बन रहा है ऐसे आपके छात्र आगे आएंगे। इसकी ज़रूरत है आज देश को, इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है, प्रखरता की भी कमी नहीं है, हम में मेहनत की भी कमी नहीं है, हमें विजन की कमी नहीं है, हमें मिशन की कमी नहीं है। तो जब विजन भी है, मिशन भी है, सब कुछ है, तो फिर जो बीज की खाई है उसको पाटने की ज़रूरत है। और मुझे भरोसा है हम पाटेंगे, हर हालत में इसको पाटेंगे। हाँ, मुझे ये भी खुशी है कि आपने जो स्किल प्रशिक्षण देने हो तो 30 से ज़्यादा MOU साइन किए हैं आपने। टाटा स्टील है, वेल है, सीडेक है, टाटा मोटर्स है, इसरो है, इन सबके साथ आपने MOU करने की दिशा में आपने आगे कदम बढ़ाए और काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी हुई कि आपने जब ये कोविड की महामारी से पूरी दुनिया संकट में से गुजर रही थी, अभी भी गुजर रही है, और हमारा देश भी उससे अछूता नहीं रहा। ऐसे वक्त में जब मेरे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि नौजवानों आप क्या कर सकते हो, ये चुनौती है आपके सामने और आप बताइए आप क्या कर सकते हो, तो उस चुनौती को मेरे NIT, मेरे IIT, मेरे ISER, मेरे IIM, मेरे छात्रों ने, मेरे प्राध्यापकों ने, फैकल्टी ने उस चुनौती को स्वीकार किया। और जब लोग अपने घरों में कैद रहे होंगे तब वो अपने प्रयोगशालाओं में आकर के शोध और अनुसंधान कर रहे थे। और मैंने देखा कि आपने भी उन गतिविधियों को आगे बढ़ाया और अभी स्टडी मटेरियल पोर्टल का भी निर्माण किया, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन परीक्षाएं भी आयोजित की, और बहुत सारी चीज़ों पर आपके छात्रों ने, बहुत अच्छा प्राध्यापकों ने इस दिशा में भी काम किया है। तो मैं उसके लिए भी आपको शुभकामना देना चाहता हूँ। और आपने सामाजिक गतिविधियों में जो किया है मुझे अच्छा लगा। मैं भी देख रहा था कि जो आपने 5 गांवों को चुना है उधर ग्रामीण क्षेत्र पे उनको विकास करने का, ये भी एक अच्छी बात है। और उन्नत भारत अभियान के तहत जो त्रिची के छात्र गांव-गांव में अपने आसपास के गांव के जो छात्र हैं, गरीब छात्र हैं, जिनको मदद की ज़रूरत थी, उनको मदद करके मेरे को बताया गया कि 3 छात्र गरीब उन गांव से, और इस समय 3 छात्र JEE की परीक्षा में निकले हैं और उन्होंने आपके यहाँ प्रवेश लिया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, मैं इसकी शुभकामना देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा काम है, ये अच्छा काम किया है आपने, आपकी टीम ने, आपके छात्रों ने, इसी की ज़रूरत है। मेरे देश में यदि 1000 विश्वविद्यालय हैं, मेरे देश में यदि 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, यदि 1 करोड़ 9 लाख से अधिक अध्यापक हैं, यदि 15 लाख से अधिक स्कूल हैं, और कुल अमेरिका की जितनी आबादी नहीं है उससे भी ज़्यादा 33 करोड़ से भी अधिक यहाँ छात्र छात्राएं हैं, तो मैं अपने छात्र छात्राओं को आह्वान करना चाहूँगा, फिर इस देश में 30 करोड़ से भी अधिक लोग निरक्षर क्यों रहेंगे? क्यों निरक्षर रहेंगे? क्यों नहीं? एक छात्र मेरा, एक एक व्यक्ति को, एक एक मेरी उस माँ बहन, मेरे उस भाई को जिसको अभी पढ़ने की सुविधा नहीं मिली है, जो परिस्थितिवश जो है अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान और अपना अध्ययन नहीं कर पा रहा है, उसको हम साक्षर करेंगे। एक अभियान लेने की ज़रूरत है, और आपने इस अभियान को लिया, आपकी खुशबू उन गांव में दिखाई देगी। आपने कई बार कहा, मेरी भी इच्छा है कि मैं आपके यहाँ आऊँ, लेकिन मिनी जब मैं आपके त्रिची में आऊँगा तो सबसे पहले मैं आपके गांव को ज़रूर देखना चाहता हूँ, उन 5 गांव को जो आपने अपने गोद में लिए हैं, ताकि मुझे लगे कि हाँ, इसकी जो ये सुंदर संस्थान इतने लंबे समय से चल रहा है, इसकी जो खुशबू है, इसका जो असर है, उसको आसपास के गांव में उसकी छटा दिखाई दे रही है। वहाँ के लोगों में आशा विश्वास जग रहा है कि नहीं, मेरा त्रिची यहाँ पर है, एक दिन जरूर यहाँ का जो नौजवान है उसको भी एक ऐसी परिस्थिति मिलेगी, ऐसा सपना मिलेगा जिसकी वो बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा है। तो मुझे भरोसा है कि आप इस दिशा में करेंगे, और आपने अच्छी पहल कर दी। मैं जानता हूँ, मुझे तो आपके यहाँ का जो आपकी फैकल्टी है उसको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो आपके साथ एकजुट होकर के, जब किसी संस्थान की फैकल्टी अच्छी होती है, और जो BOG के अध्यक्ष हैं
उनको भी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप सब लोग मिल करके मेरे इस संस्थान को अच्छा कर रहे हैं, इसका गौरव बढ़ा रहे हैं और इस संस्थान को लगातार नंबर 1 पर NITs में नंबर 1 पर बना करके रखे हैं। तो ये कम चुनौती नहीं है। एक चुनौती होती है कि किसी स्थान पर सफलता तक पहुंचना, लेकिन उस सफलता को बरकरार रखना ये दूसरी चुनौती होती है। और ये मेहनत से ही हो सकती है, ये धैर्य से ही हो सकती है, ये प्रखरता से हो सकती है। और आप उस धैर्य के साथ इस संस्थान के स्तर को बनाए हुए आपने इसी बीच इंजीनियरिंग के साथ साथ मैं देख रहा था MBA MCA और MSc प्रोग्रामों को भी और भाषाओं को भी आपने शुरू किया है। बहुत अच्छा है, ये विविधता जरूरी है, बहुत अच्छा है। और ये बहुविद्यालयी जो स्वरूप आपने इसको दिया है ये भी बहुत अच्छा है। आपने पर्यावरण की दिशा में काम किया, जो JEE की कोचिंग का तो किया ही था, कम्युनिटी सेंटर रेडियो पर भी ध्यान केंद्रित किया, ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य, रक्तदान, नेत्र चिकित्सा ये शिविरों को लगाया। और कृषि के क्षेत्र में भी हमको बहुत अच्छा करना है। गांव-गांव में कैसे करके उनको उपकरण बना सकते हैं, कैसे करके उनकी चीज़ों को जो आसपास है, मेरे NIT को अब त्रिची को, क्योंकि वो समृद्ध है, सक्षम है, विजन से भी सक्षम है और इसलिए इसको चाहिए कि आसपास मेरे तमिलनाडु का ये ऐसा केंद्र बन जाए जब दूर दूर से भी लोग आए, यदि कुछ समाधान चाहिए, यदि वहाँ की गवर्नमेंट भी कहे, वहाँ का चीफ मिनिस्टर भी कहे कि नहीं नहीं उस संस्थान में जाओ, उस संस्थान में समाधान निकलेगा। मैं जब चीफ मिनिस्टर रहा तो मैं तो ऐसे संस्थानों में अपने अधिकारियों को भेजता था, जाओ आप वहाँ जाकर डिस्कस करो, वहाँ के फैकल्टी से बात करो, वहाँ क्या नया हो सकता है इस बात को लाओ। कृषि के क्षेत्र में क्या हो सकता है, जड़ी बूटी के क्षेत्र में क्या हो सकता है, जैव विविधता के क्षेत्र में क्या हो सकता है, खाद्यान्न के क्षेत्र में क्या हो सकता है, जो उपकरण है उनको उनके क्षेत्र में नया क्या हो सकता है। और जब ये नए मन जो उत्सुकता से भरे जो युवाओं के मन होते हैं वो नई चीज को खोजते हैं, उनको पारस्परिक एक टास्क देने की जरूरत होती है। अभी आपने देखा ना कि पीछे के दिनों में हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री जो इनोवेशन हमारा एक जो बच्चों का हम वहाँ से लेकर के ध्रुव जिसको हमने चेन्नई से शुरू किया था और दिल्ली तक हम लाए थे बच्चों को, स्कूली बच्चों को, 60 छांटे हुए बच्चे 14 दिन में। क्या प्रतिभा थी, उनको ऐसे आइडियाज थे। मेरे चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो, ग्राम्य विकास मंत्रालय हो, रासायनिक मंत्रालय हो, इन सब मंत्रालयों ने उन बच्चों को अपने आइडियाज दिए, समस्याएं दी और धैर्य उन्होंने ऐसे समाधान निकले, ऐसे ढूंढे कि सब लोग हतप्रभ थे कि इतने कम आयु में कितना ज्यादा विजन हमारे बच्चों का है। और जब हम हैकाथॉन किया था हमने, तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के तहत वहाँ भी 87 के करीब बड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर के हमारे छात्र छात्राएं इन्हीं तकनीकी क्षेत्र के छात्र छात्राएं लाए और जिसका हम लोगों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने भी उनका अवलोकन किया। हमारे पास है, लाइन देने की जरूरत है। सबसे पहले तो इनको ये कहने की जरूरत है आप जो है नौकरी के लिए पैदा नहीं हुए, नौकरी देने के लिए पैदा हुए हैं। अपने देश में क्या कर सकते हैं इस समय, इसकी जरूरत है। लेकिन उनको पूरी तरीके से कैसे वो वहाँ की समस्याओं के साथ मिल करके जुड़ करके समाधान निकाल सकते हैं, इसकी जरूरत है। आपने जल संरक्षण, बायोगैस प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इत्यादि पर्यावरण हितैषी के और स्वच्छ कैंपस के दिशा में भी बहुत अच्छा माहौल बनाया है। मैंने इस दिशा में काफ़ी कुछ आपका वो देखा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो नई शिक्षा नीति आई है, इस नई शिक्षा नीति को कैसे करके नीचे तक लेकर के जाएंगे। ये नई शिक्षा नीति जो आई है, पूरे देश में उत्सव का माहौल है, उल्लास का माहौल है, खुशी का माहौल है। अब चेंज होगा, आमूल चूल बड़े परिवर्तनों के साथ ये नई शिक्षा नीति आई है। मैं जरूर चाहूँगा कि पूर्व छात्रों को, जो आपके पास छात्र हैं,
पुरुषार्थ उनका भी एक टास्क फोर्स बने और एक फैकल्टी का टास्क फोर्स बने और जो नीचे तक कैसे करके ले जा सकते हैं। और वैसे भी ये बहुत सक्षम है। ये जो नई शिक्षा नीति है ये इंडियन भी है तो इंटरनेशनल भी है, ये इम्पैक्टफुल भी है तो इंटरेक्टिव भी है, ये इंक्लूसिव भी है। इसमें सभी चीज़ें समावेश हुए हैं। इसमें इक्विटी भी है, क्वालिटी भी है और एक्सेस भी है। इसकी आधारशिला है इस पे। और निश्चित रूप में इसीलिए इस शिक्षा नीति से सब लोगों का, दुनिया के तमाम देश कह रहे हैं हम भी भारत की NEP को अपने यहाँ लागू करेंगे, क्योंकि हम लोग पूरे व्यापक फलक पर इस नीति को लाए हैं, इस शिक्षा नीति को लाए। इसका लाभ मेरे अंतिम छोर तक के बच्चे को ज़रूर मिले, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं सोचता हूँ कि क्योंकि हम लोग सब मिलकर के ऐसे भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाने के लिए जुट रहे हैं, जुटे हुए हैं। और ये त्रिची NIT में पूरा लीडरशिप लेता है। तो मेरी शुभकामना है कि जो आज ये भवन का आपका उद्घाटन हो रहा है, ये स्वर्णिम भारत का स्वर्णिम भवन है, ये स्वर्णिम भारत का स्वर्णिम भवन है। तो ये दोनों लोग जो जुट करके रहेंगे, ये जो स्वर्णिम भवन है वो स्वर्णिम भारत के लोग इस स्वर्णिम भवन को देखने के लिए इसलिए आएंगे ताकि ये स्वर्णिम भारत की आधारशिला आपसे होकर के गुजरेगी। और मेरी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। We are lost for words. The Minister of Education has been so wholehearted in recognizing NIT's position among NITs and among the centers of higher education in the country. You've recognized our position as a national MOOC coordinator, as one of the best NITs. But a very fine message from your speech was that it is not the building, but the men and women who are shaped in these buildings that make an institution. And NIT Trichy, as you rightly recognized, does have some of the finest alumni who are doing great service to the nation and to institutions in the world at large. We also register your concern that industry and institute interaction has to become more intense, and you have also recognized that in the recent years NIT Trichy's patent filing and award numbers have gone up. Though we also are in alignment with you in seeing that the patent and research gap is still wide and that needs to be reduced. We have been given a fair idea about the new education plan by you, the Minister, yourself, and NIT Trichy will do everything in its power, in its imagination, and with all the resources at its command to turn this country into Atmanirbhar Bharat, Unnat Bharat, Sureshth Bharat, and Swarnim Bharat. We would see to it that in the years to come, we would not have the brain drain that all of us are concerned about. We would not have so many lakhs of our students going out. We would certainly welcome the prospect of international competition, which in turn only bodes well for higher education in our own country. We will also see that our students don't go after packages, but they would become job creators and not ones who go after jobs. We wish that our conditions change very soon and everything is conducive for the minister to travel to Trichy, to come to NIT Tiruchirappalli and also visit the villages that NIT Tiruchirappalli has adopted. We are also, like you, sharing this hope and belief that
There are innovative solutions that will come from these ignited young minds. We also register your advice that a task force will be formed with the alumni and the faculty. And together, we assure you that the implementation of the new education policy will be on the right track. And the future bodes well for all of us. The country gets stronger on account of that. Thank you, Shiksha Mantri, for one of the finest and most inspiring speeches we've had in a long, long time. And these words we will remember for many, many years. Thank you very much for being with us. This is a Swarnim Muhurt, Swarnim Building, Swarnim Bharat, and Swarnim Bhashan. Thank you very much for that. And may I now call upon the head of the Department of Chemical Engineering, Madam Meera Sharifa Begum, to propose the vote of thanks. Good evening and namaskar. Today, at this moment, we, the chemical engineering faculty, staff and students are very happy and proud that our long dream become true for facilitating our research infrastructure, development of new labs, seminar halls, faculty rooms in this newly constructed Golden Jubilee building of chemical engineering in view of our Golden Jubilee celebrations in 2017. On behalf of the Chemical Engineering Department, I take this opportunity to propose vote of thanks for those who involved in our rejoice. We are privileged and feel honored to thank our Honorable Minister of Education, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji, for kindly agreeing to inaugurate our Golden Jubilee building and deliver thought-provoking speech. We are all aware that the Honorable Shiksha Mantri is a writer, good academician, sensitive thinker, and a mass leader. Our country is constantly benefiting from such a honorable minister. We are very much thankful to our honorable minister for being with us in this occasion. Thank you, sir. Extending our sincere gratitude to Additional Director General Shri Madan Mohan for joining with us in this occasion. Thank you, sir. We extend our heartfelt gratitude to the Chairperson, Board of Governors, Sri Bhaskar Bhatt, for his kind concern on presiding over this inaugural function in a very short notice. Our Chairperson is an eminent personality, successful industrialist, whose vision is the development of our institute. We are thankful for sparing your valuable time with us and grace this event. Thank you, sir. With immense pleasure, we express our gratitude to our beloved director, Dr. Mrs. Minisaji Thomas, who is a wonderful administrator, supporting to receive financial assistance, guiding us in all the arrangements, and our madam is an excellent motivator to uplift our institute to greater heights. Thank you, madam. Our sincere gratitude to the ministry for providing financial support. Without that, it would not be successful. We are thankful to the Registrar and Dean Faculty Welfare, Dr. Mrs. Sendralla, former Registrar Mr. Palanivel, former Dean Planning and Development, Dr. C. Nadarajan and Dr. Samson Matthew,
Present Dean Planning and Development, Dr. Thurai Selvam, who has coordinated in all our arrangements. Dr. Gopalakrishnan, Professor, Architecture, helped in structural design for rendering their collective efforts towards successful completion of this construction. Extending our sincere gratitude to Executive Engineer Mr. Narayanan, Mr. Nallatambi and team, CLG Head Dr. Bhaskar and team, Mr. Samson, for providing electrical, audiovisual, networking, floral and webcast live arrangements to make this as grand virtual event. We are thankful to the CPWD officials and their team of silent work partners who have constantly supported in periodic inspection during construction to bring out this building. I would like to extend my sincere thanks to the present media team, especially Dr. Shiva and Dr. Sivakumaran, for publicizing this event in a great care. Sincere thanks to Dr. Aranagiri and Assistant Registrar Dr. Satish Kumar for rendering their support in communications to the ministry. I would like to thank all the deans and HODs, faculty, staffs, students and alumni of our institute who are all viewers and make this event in a grand success. Finally, I conclude and assure that we, the chemical engineering faculty, staff and students will extend our contribution constantly and work towards the vision for making our society eco-friendly. Thank you. Jai Hind.